इस वीडियो में करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, क्लास 10 सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी आपके कमेंट्स हों, प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पॉलिनोमियल ऑलरेडी हम क्लास 9 में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या है कुछ एग्जाम्पल पॉलिनोमियल के? 2x + 6, 3x² + 4x + 5, 2x³ + 4x² + 7x + 8 and so on. These are some examples of polynomial. Degree of polynomial, the highest power of variable is called the degree of polynomial. यानी इसमें जो वेरिएबल या चर है उसकी अधिकतम घात उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे इसमें चर की अधिकतम घात 1, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल is 1. इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल is 2. इसमें वेरिएबल की अधिकतम हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल is 3. ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial. Such polynomial whose degree is 3 are called cubic polynomial. Same. If we draw the graph of this polynomial, we get a straight line. Graph of quadratic polynomial is U or V shape, and graph of cubic is zigzag. In general way, we represent it in ax plus b. Quadratic is ax square plus bx plus c, and cubic is ax³ plus bx square plus cx plus d. In each it is compulsory a is not equal to 0. अगर a 0 हो जाएगा तो क्यूबिक बन जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बन जाएगा लीनियर और लीनियर बन जाएगा कांस्टेंट। दैट्स व्हाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x और x³ means a is not equal to 0. Then 0 of polynomial. Value of polynomial, suppose fx is any polynomial 2x plus 6. If we put x equal to 1, अगर x की 1 रखते हैं तो value of polynomial at 1 equal to 2 into 1 plus 6. Replace x by 1. x की जगह 1 रख देते हैं. 2 plus 6 it is 8. Value of polynomial at x equal to 1 is 8. Then now 0 of polynomial. ऐसी वैल्यू x की जिसको इसमें रखने पर पॉलिनोमियल वैल्यू 0 हो जाए। Such value of variable by putting it in polynomial we get 0. For example, if you put x equal to -3, so value of polynomial at -3 is 2 into -3 plus 6. 2 into 3 -6 plus 6 it is 0. Hence x equal to -3 is a 0 of polynomial. Is it clear? One more important result. If it is quadratic polynomial, then it has maximum 2 zeros. If it is linear polynomial, then it has maximum 1 zero. If it is cubic polynomial, then it has maximum 3 zeros. It means maximum number of zeros is the highest power of variable in polynomial. If any polynomial has n degree, then it has maximum n zeros. अगर कोई polynomial की डिग्री n है तो उसके मैक्सिमम n जीरो होंगे। डिग्री 3 है तो उसके मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। डिग्री 1 है तो उसके मैक्सिमम 1 जीरो। इज इट क्लियर? हम क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाल सकते हैं? ax plus b equal to 0 by transposing ax equal to -b. So x equal to -b upon a. This is the zero of linear polynomial. How can we find zero of quadratic polynomial? Now we are trying to find it. Quadratic polynomial के zeros कैसे निकालें? Suppose 2x square minus 8x plus 6 is any polynomial. इसको factorize करें. We can take here 2 common. It is x square minus 4x plus 3. By splitting method, find such numbers whose sum is -4, product is 3. So -1 minus 3 is -4, -1 into -8 is 3. So you can write it 2 into x square minus 1x minus 3x plus 3.
First here, second here, x is common, x minus 1, minus 3 is common, x minus 1. So 2 is already outside, x minus 1 is common, remaining inside the bracket x minus 3. By showing it 0, this one equal to 0, then x minus 1 0 and x minus 3 equal to 0. So x equal to 1 or x equal to 3. Hence 0 of polynomial equal to 1 and 3. In general, we are representing zeros by using alpha and beta. सामान्यतः हम जीरोस को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर अल्फा और बीटा तो जीरो है तो पॉलिनोमियल होगा k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा. ओके, अगर हम इसको कंपेयर करें पॉलिनोमियल से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल पॉलिनोमियल क्या बनेगा k. फॉर्मूला है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. बाय कंपेयरिंग k equal to a coefficient of x square minus k into alpha plus beta equal to b and k into alpha into beta equal to c. By using it, alpha plus beta is equal to b upon minus k. Since k equal to a, that's why alpha plus beta equal to minus b upon a. This is the relation between sum of zeros and coefficient of xy. Now alpha into beta equal to c upon k. Again k is equal to a, so alpha into beta is equal to c upon k. Again relation between product of zero and coefficients. Sum of zero is equal to minus b upon a. Product of zero is equal to c upon a. A, B, C. A is the coefficient of x square, B is coefficient of x, and C is constant. Now we can do exercise 2.2 of NCERT. The question number first is find the zeros of polynomial and verify the relation between zeros and coefficients. The third first 6x square minus 3 minus 7x. First we can rearrange it in standard form. 6x square minus 7x minus 2. Now factorize it by splitting method. Product of first and last. 6 into minus 3 minus 18. Find two numbers whose sum by division is 7 and product is 18. 9 minus 2 is minus 7 and product of minus 9 into 2 is minus 18. So split it. 6x square minus 9x plus 2x minus 3. First pair, second pair. 3x is common here, 3 to the 6x, 3 to the 9. Only 1 is common, 2x minus 3. So 2x minus 3, 3x plus 1 is the factor. For zeros, put 2x minus 3 equal to 0 and 3x plus 1 equal to 0. So 2x equal to 3 or x equal to 3 upon 2. This is first 0. 3x equal to minus 1 or x equal to minus 1 upon 2. This is second. These are the zeros of polynomial. We can represent it by alpha and beta. So 1 0 alpha equal to 3 by 2 and other 0 beta we can say it is minus 1 upon 3. Now we have to relate it. So if we compare it by comparing ax square plus bx plus c. What is the value of a? 6. B minus 7 and c is minus 3. The sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b upon a. What is alpha? 3 upon 2. Beta minus 1 upon 3. Value of b is minus 7. This one is minus of formula. Value of b
एक एलसीएम, एलसीएम 6, 2 3 6, तो 3 3 9, 3 2 6, 2 by 2 plus into minus into minus plus 7 upon 6, 7 upon 6 equal to 7 upon 6 verified. Same one more, product of zeros, alpha into beta, C upon P, alpha is d by 2, beta is minus 1 by 2, value of C is minus 3, value of A is 6, given the P cancel, given the 3 to the 6, so minus 1 upon 2 equal to minus 1 upon 2, hence verified. Now second question of exercise 2.2. Find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. Sum of 0 is 1 upon 4, product of 0 is minus 1. Sum of 0 is alpha plus beta is 1 upon 4, product of 0 is alpha into beta square. So formula is x square minus sum of 0 alpha plus beta into x plus product of x. By putting the values, x square minus this one is 1 upon 4x, this is minus 1. Take LCM. LCM is 4. So 4x square minus x plus into minus 4. So 1 upon 4 into 4x square minus x minus 4. Hence the polynomial is 4x square minus x minus 4. Here k is 1 upon 4. यदि आपको कोई डाउट है, किसी प्रकार कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।